Hi everyone, my name is Richa and someone sent me this question on WhatsApp. So there is a matrix that is given to you and you have to solve this expression as a polynomial in A. So let's see how we can do this. So this is the matrix that is given to you and we have to express this whole term as a polynomial in A. This seems to be a very complicated term. तो इसको easy करने के लिए what we can do is first of all let's write down the characteristic equation of this. Okay, so I hope you all know how to write the characteristic equation of a 2 cross 2 matrix. तो कैसे निकालते हैं इसको? X square minus trace of A into x plus determinant of A that is equal to 0. This is how you find the characteristic equation of a matrix which is of order 2 cross 2. So उससे ऊपर का जो होता है that you can check on your own, but 2 cross 2 का you have to find like this. So for this you can see that we need trace of A and we need determinant of A. So let's find out the trace of A here. So trace of A, what is it going to be? What is trace of A? Trace of A means adding the diagonal elements. So what is that? 3 plus 1, 4. Diagonal elements is 1 plus 3. And determinant of A कैसे निकालते हैं? Very simple, AD minus BC. We all know that, right? So यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 1 into 3 minus 1 into 2, right? So 3 plus 2 that is going to be 5. Okay? So यहाँ पे this is called the characteristic equation. So why am I finding it? उसको भी अभी I will tell कि why we are finding it. Okay? So now here x square minus trace is 4x and determinant is 5, right? So this is equal to 0. So ये हमारा characteristic polynomial बन गया. अब why did I find this? The reason to find this is that every matrix satisfies its characteristic polynomial. Okay, so I'm sorry. So यहाँ पे whatever is the value of x, now A will be satisfying, the matrix will satisfy this equation. That means I'm sorry, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, I'm really sorry, यहाँ ज़ीरो नहीं आता, I'm sorry. So this will definitely satisfy this equation, right? तो पॉलिनॉमियल ऐसे निकालते हैं. ये मैंने ज़ीरो गलती से लिख दिया था, वो मैंने पहले ही लिख दिया था गलती से. एक्चुअल में ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, दिस मैट्रिक्स इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन. दैट मीन्स वो इक्वल टू ज़ीरो देता है इसको, बिकॉज ए इज़ अ वैल्यू, ए इज़ अ मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज इट. ठीक है, आई होप यहाँ तक यू आर क्लियर विद दिस. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. व्हाट यू हैव टू डू इज़ लेट गो बैक टू दिस टर्म. इस टर्म को आप ट्राई करो कि इस तरीके से, इफ़ यू कैन राइट डाउन, just try to write it down in form of this. So let's just see how we can do that. So what I'll do is let's just write this term over here. So this is a little complicated term, so इसको लिख लेते हैं. a6 minus 4a5, let's just write that down, minus 4a5, okay, and then plus 8a4, and then you have minus 12a cube plus 14a square, minus 12a cube plus 14a square. ओके, सो ये मेरा, लेट्स जस्ट क्रॉस चेक, कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ, दिस इज़ फाइन. ओके, सो अब क्या करते हैं. नाउ माई टारगेट इज़ कि मैं किसी तरीके से आई वॉन्ट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर टर्म. सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू दैट. सो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 आया है. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सी कि देखो, इफ़ आई टेक समथिंग कॉमन तो माइनस 4a और प्लस 8i की फॉर्म में बन जाएगा अगर मैं a4 को कॉमन लेने का ट्राई करूँ तो. ओके, सो मैं 8 को 5 प्लस 3 लिख सकती हूँ क्या? येस, डेफिनेटली. लेट्स राइट इट लाइक दिस. ठीक है, सो a6 minus 4a5 plus 5a4 plus 3a4 and rest terms
लेट्स जस्ट राइट एज इट इज़। ये सिर्फ अभी दिखने में टाइम टेकिंग लग रहा है, बिलीव मी, वंस यू नो, वंस द ट्रिक हिट्स यू, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रिक। ओके, यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन जस्ट 2 minutes वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज, यहाँ से अब आप ट्रिक करो कि आप A4 को यहाँ से कॉमन ले लो। अभी मैंने इसको इग्नोर नहीं करा है, प्लीज़ नोट दैट, आई विल कम बैक टू दिस। ठीक है, बाकी का जो बच गया, जस्ट आई हैव रिटन दिस बिकॉज आई नो कि दिस पर्टिकुलर टर्म ओवर हेयर इज़ ज़ीरो, तो मैं इसको यूज़ करने के चक्कर में आई हैव डन लाइक दिस, आई ट्राई टू यूज़ दैट थिंग। सो व्हाट विल बी लेफ्ट, वी आर डीलिंग विद जस्ट these 3 terms, I am repeating again and again. So minus 4a बच जाएगा because 1a is out, and here we are left with nothing but I. Can you see I got this? And we just find out that this was 0, है ना? So this went to be 0, तो ये पूरा ही term 0 हो गया. So this was pretty simple. Now let's just note this down, बिकॉज अब हमें इसको सॉल्व करना है। 14a स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। नाउ दिस इज़ 0, राइट? सो नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट दीज 3 टर्म्स। इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। आई जस्ट नोट डाउन दैट 3 टर्म्स आर 3a4 minus 12a cube and plus 14a square, right? Again, go back to this, just try to figure out if I can make something like this over there, तो मेरे लिए बहुत easy हो जाएगा। So that is what I will try to do again, ठीक है? So मेरे को again, this is the term that I need, है ना? तो यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं बारी बारी ऊपर नहीं, I don't need to show this. So what I can do is again, I will try to make this term out of that again. तो कैसे कर सकते हैं हम? अगेन इफ़ आई टेक ए स्क्वायर कॉमन, तो अंदर ए स्क्वायर बच जाएगा, और मैं 3 भी कॉमन लेने का ट्राई करती हूँ, राइट? व्हेन आई टेक 3 ऑल्सो कॉमन, तो यहाँ पे 4a बचेगा, राइट? कैन यू सी दैट? एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को फिर से चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आई डिड प्रीवियसली। तो इसको अगर मैं 15 बना देती हूँ, तो अंदर 5a बच जाएगा, फिर से 0 बन जाएगा। सो दिस विल बिकम वेरी ईजी। सो व्हाट आई डू इज़ आई विल राइट दिस 14 as 15 minus 1. Can I write like this? है ना? So now can you see if I take something again common out of this, so this will again become that. It will be so easy. So again you take out, okay, again we are dealing with these 3 terms, इसको बाद में देखेंगे, right? So a square minus what will be this 4a, और ये क्या होगा 5, ए स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो आई बचा अंदर, और ए स्क्वायर। अगेन वी आर बैक टू दैट, वाज़न्ट दिस 0? ये तो 0 था, सो दिस इज अगेन गॉन। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, कैन यू सी दैट? सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद माइनस ए स्क्वायर, राइट? एंड व्हाट इज माइनस ए स्क्वायर? नाउ लेट्स गो बैक टू द सेम इक्वेशन। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज 0, तो ए स्क्वायर, इसको let's just give it a minute, okay? So a square minus 4a plus 5i is 0. यहाँ से a square का value we can find out like this. उस तरफ ले जाओ and you will get this. Now here we are getting minus a square. What is minus a square now? Just take out minus sign, and this becomes your answer, right? So which one is our answer? Can we say second option is our answer? I'm unable to tick on that. So second option is my answer, which is 5a minus 4a. Yes? So can you see that? So this is my final answer, second option. Okay? Thank you for watching. Please subscribe and share my channel and like the video if you like it. Thank you.